Good evening, sir. Yeah, good evening. Okay, today we'll do some more problems. Uh, and then next week onwards we'll do indefinite definite integral. So that will also involve a lot of integration, but mostly we'll try and cover indefinite part in today's class. Okay, whatever is left. So try this one first. I will just write down couple of questions. This is the first one. So these two questions, try these. Anybody getting anything here in the first one? Sir, we have to use substitution. What substitution would you use? Sir, we can assume 1 plus 2 root 3 sine 2x as t. And Hmm. the 1 minus 1 root 3 is a constant, so it will be pulled out from the integral. Mhm. And then we will try to make something like, because sine 2x will be like 2 cos x. See, you could possibly do it by that, but uh, I think there is a better substitution. Okay. Okay. Sir, at some time we can substitute it as sin x plus cos x as t. So we'll have Mhm. the derivative above. Correct. Sin x plus cos x, if you take as t, think about it. What is t square? T square is 1 One. plus sin 2x.
Is everyone understanding what is happening here? One. T Yes, square, yes, sir. T square will be 1 plus Yes, sir, sine yes, 2. sir. Whole square. So sin 2x is basically T square minus 1, right? Yes, sir. So what will happen is, why is this a better substitution? Because it handles this part directly. Why? Because if you differentiate this, it will be cos x minus sin x dx is equal to dt, right? Yes, sir. So this part becomes a dt on top. Dt constant can be taken outside, and you have a dt by 1 plus 2 by root 3 and t square minus 1, right? Yes, sir. So this is in a standard form because denominator has some t square minus some constants and all, right? Yes, sir. Does everyone know how to do integral of dt by t square minus a square? Yes, sir. 1 upon 2a log x minus a Hmm. upon x plus a plus c. Hmm. It will come like this. I hope everyone knows this one. Yes, sir. You know it, but everyone else? Basically, you have to split it as 1 by t minus a minus 1 by t plus a divided by 1 by 2a. Okay. If you split it like that, you will be able to get it. Okay. So first one is done because after this point, you can just simplify it and do it, right? I hope it is clear for everyone how to do first one. Yes, sir. Okay. You have to finish it yourself. Try the second one now. Are you guys getting the idea of how to approach this? Sir, partial fractions. No, that will be too long. Okay. Sir, can we use like x plus 1 whole square minus 2x X plus 1 whole square minus 2x. in the How upper will you part? you can do you are saying do plus 2x and minus 2x. Okay. You can do that, but that doesn't solve your problem because there is still a minus 2x by this thing that will be left, right? Yeah. It will, what you are doing is okay, but what will happen is it will become 1 minus 2x by x plus 1 whole square, right? Yes, sir. This part is okay, but what about this part then? It's still annoying, no? The second integral is still annoying, right? Yes, sir. So इसलिए that is not the best approach. What else? What else can you think of? Think of some other approach. Remember this rule that we had seen. This rule everyone should remember. Whenever you see e power x multiplied with something, you should at least think about this once. Okay.
Is it possible to express this thing as f of x plus f dash x? So, but if we differentiate any one of them, it's like not coming, right? हाँ, तो वही तो उसमें थोड़ा सोचना है कि कैसे उसको स्प्लिट करोगे ना. If you think a little bit cleverly, you might get something. Directly तो नहीं हो रहा है. You have to think of splitting it intelligently. X square plus 1 by x plus 1 whole square. So, can we express like x square by x plus 1 whole square plus 1 plus x plus 1 whole square? हाँ, वो तो obvious split है, लेकिन उससे तो हो नहीं रहा है ना. You can express it, but is it coming as f of x plus f dash x? No, right? So the denominator is already looking like some kind of differentiation. Exactly. So think of another way to split it. I'm sure one of you will be able to guess how to split if you think a little more. The correct split is this, okay? See. इससे कुछ फायदा हो रहा है देखो तो. Here 1 x minus 1 will remain and it will become x plus 1, right? Yes, sir. What is the derivative of the first one? Everyone should know quotient rule differentiation. अच्छा denominator Same, square. sir. 2 by x plus 1 whole square. Like, It's over, right? F of x yeah. and f dash x. The trick was to notice, like someone said, that x plus 1 whole square looks like the derivative of something. What something? It should have 1 by x plus 1, right? Somehow. Right? So, So therefore, x minus 1 by x plus 1 अगर आ गया तो हो जा रहा है, right? So I'm sure there are other ways to do it also, but this is the best way, okay? So what you will get here is, my answer will be e power x into x minus 1 by x plus 1, right? yes, sir. And then I know directly f of x is this, no? X minus 1 by x plus 1. Correct? Yes, sir. After that, it is just doing the derivative of that 3 times. So already remember, you already know f dash x is equal to this, right? Yes. So you need to do one more derivative of that and one more derivative of that. And eventually you will put x is equal to 1 in that, right? Yes, sir. Is everyone getting what what is happening here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Question 3 then. If f of integral of 1 by x is equal to g of x plus c and g of 1 is equal to 0, find g of half. Anytime you see things inside roots looking like things like this, always it is a trigonometric substitution most probably. Think of trigonometric substitutions to solve and remove the roots. Okay? So I can take x as cos 2 theta. That is the correct substitution. What is the benefit of cos 2 theta? It does I one. can
So it is 2 sin square theta and 2 cos square theta next Hmm. one. The benefit is that And as soon as you do then x, now yes, you have tan to theta will simplify come. it and solve it. Now simplify and try to solve it. The benefit of this substitution is that it removes both the roots directly in one shot, right? Yes, sir. If you had taken any other substitution, you might be able to remove one of the roots, but the other one would not be removed, right? For example, if there was single root 1 minus x, you could have taken x as sin square theta or something, right? आपका वॉइस तो अटक रहा है थोड़ा थोड़ा. Can you hear me right now, everyone? Yes, I can hear you. Okay. So if there is somebody is not able to hear, then I think the problem is on your network, because some other people are able to hear, I think. What I'm saying is, if it was a single root 1 minus x, 1 plus x, if it was 1 plus x, I could have taken x as tan square theta, right? Yeah. But the problem is that there are two roots. In one step, can we remove both the roots? Yes, by this substitution. If you try any of the other substitutions, one of the roots becomes a problem, right? I hope everyone is following why this substitution. Correct? Yes, sir. Now try to solve the integral. It is 1 by cos 2 theta. Inside here it becomes tan theta, and dx is minus sin 2 theta multiplied by 2 d theta, right? The integration of tan theta, right? हाँ, right now tan theta कैसे है? बहुत सारी चीज है ना. It's not just tan theta, no? There are many things, no? Yeah. You are getting something like this, 1 by cos 2 theta, and tan theta can be converted to sin theta by cos theta, and this can be converted into minus 2 sin theta cos theta, right? This will become minus 4 sin theta cos theta d theta. So cos theta gets cancelled here. You have integral is minus 4 comes out sin square theta by cos 2 theta. And actually, you should not take out the minus 4. You can take out minus, but keep the 4 inside only. I hope everyone is getting till here. Is everyone getting till this step right now? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, कोई आइडिया है? Anyone, anything, any ideas here? So if we can write it as tan theta into tan 2 theta, then we can use that formula of Can tan we into use higher powers? Wait, Shreesh, what are you saying? Tan theta into tan 2 theta, then what? then tan of 2 theta minus theta equal to tan 2 theta minus tan theta divided by 1 plus tan theta into tan 2 theta into tan theta, right? उससे कुछ आ रहा है? तो इससे सर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे शायद tan theta into tan 2 theta आ जाता है. बस सर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही किया करते थे मतलब. And I write both sin square theta as 2 into 1 minus cos 2 theta. That is Sir, correct. can we use like cos 2 theta sin
साइन स्क्वायर थीटा को अपन cos 2 थीटा में लिख सकते हैं ना? हाँ वही सही तरीका है. Shrish, I think this may work, but it is becoming more complicated than worth it. I don't think it is worth it. Okay. समझ में आ रहा है? It might work, but not sure if that much effort is worth it. Okay? Yes. Because you are getting tan square theta into tan 2 theta, no? Yes, sir. So it's not very easy. Better is to get it like this and then write 4 sin square theta. You can convert to cos 2 theta, right? Basically, it is 2 minus 2 cos 2 theta, I think, right? Yes, sir. So, because 1 minus cos 2 theta would be 2 sin square theta. So, correct. So, 4 sin square theta will be this divided by cos 2 theta, right? So, now my integral is simply 2 theta minus twice of sec of 2 theta, right? Sir. What is the integral of sec of 2 theta? Yeah. Sec 2 theta. Alien bond sec 2 theta plus tan 2 theta. Yes, by 2. Yes, yes. This will be the integral of sec 2 theta. So after that, once you have gotten this, at this step, you can put back your x and all and try to find the values now. There is a constant plus c also, which will come by knowing g of 1 is equal to 0. From there, you will find out plus c and then you will find out g of half. Is it clear to everyone? Yes, sir. Sir, like, can you do the derivation of cos sec 2 theta? So when we try to do the integral of sec theta d theta, right? There is no nice way to integrate it immediately. I think what you have to realize is sec square theta minus tan square theta equal to 1. So what we know is sec theta plus tan theta multiplied by sec theta minus tan theta is equal to 1, correct? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें अप एंड डाउन अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे sec theta plus tan theta up and down, then nothing has changed, right? Yes, sir. Correct, no? Nothing has changed, no? Yeah. But what is the advantage? Okay, actually, this step is not required. I thought it will be required, but it is not required. Just multiply up and down like this and see it is magically becoming dt by t. T is equal to sec theta plus tan theta. Take It comes, Yeah, Take I see it. I see. take the derivative of this, it will become the top part, right? Yes, sir. I understood it. Sometimes in the books you will see formulas in terms of tan pi by 4 and all, right? That's why I was asking like that. Sometimes in the book there will be different formulas. The formula is different, but when you simplify it, it will come out to be this only. Okay. So for example, if formula, what formula have you seen? You have seen something like this, like log of tan of pi by 4 plus x by 2, right? Correct? Yes, sir. यही देखा है ना? So notice what that is. Pi by 4 plus x by 2 is 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2, right? Yes, sir. And this will become basically cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2, right? Yes, sir. You can prove, I think, that is the same as ln of sec x plus tan x. So let's see how to prove that. ln of sec x plus tan x का क्या expression है? देखो 1 plus sin x by cos x है ना ये,
right? This is 1 plus sin x by cos x, and here you have this thing. So what to do here? Okay, I'll multiply up and down by cos x by 2 plus sin x by 2. Okay. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. So see, the denominator is becoming cos square x by 2 minus sin square x by 2, right? Uh, Which is cos x, and numerator is becoming 1 plus sin x. yes, sir. Do the square of the numerator, it will become 1 plus sin x. So isn't that equal to this? Right? Yeah. So both are the same thing. The reason they look different is because someone has used a different method to integrate it. But I prefer this method where you magically multiply up and down and it becomes this. Okay? Okay, sir. Thank you. It is possible to possibly do it in a different way. Maybe you have seen a different way to prove it. Okay? But the idea is same. Eventually the answer is the same. Okay? Fine. We'll move on to the next one. Okay. If integral of sin x by sin cube x plus cos cube x dx is equal to alpha log base e 1 plus tan x plus beta log 1 second. Okay, actually, I don't know, the last part of this is not very clear. So just try to find the integral. Okay, I don't care about alpha beta. Just try to find the integral if you can. Is everyone aware of what the standard process is when you try to do such integrals? Just dividing by cos cube theta. Correct. Dividing by cos square, cos cube, that is a common strategy because what it does is converts everything into tan and sec, right? In this case, if you divide by cos cube, notice what will happen. It will become here sin cube by cos cube plus cos cube by cos cube is 1, right? So the top part here becomes tan x times sec square x divided by 1 plus tan cube x. Correct? Yes, sir. So now it is obvious from here that you should take tan x is equal to t as your substitution because already sec square x dx is there. No? Yeah. So you Yes, will sir. get finally t dt by t cube plus 1. Now this is the step where you need another technique. What to do here?
divide both up and down by t. डिवाइड बोथ अप एंड डाउन बाय टी, बट उससे क्या फायदा होगा? नीचे में इट विल बिकम वियर्ड, नो? सी, Adding Like, one, subtracting one. adding one, subtracting one could be useful, yes. Why is that useful? Because it will help you cancel some factors, right? Yes, sir. Sir, a cube plus b cube and adding one, subtracting one. Yes. If you, if everyone should be aware of a cube plus b cube formula like this, right? Yes, sir. No, but actually adding one, subtracting one still leaves the major part of the problem is still left. No? It doesn't help us much actually, because you're still left with an integral like this. Yes. अरे हाँ. सेकेंड वाला इंटेग्रल तो डिफिकल्टी है ना फिर भी, right? It makes one of the integrals easy, but doesn't help with the second one. So I will not start doing this. So here, one of the students was mentioning partial fractions. This is the time to use partial fractions. Has everyone heard of partial fractions? Is everyone aware of partial fractions, what to do? Yes, sir. Sir, but I yes. forgot how to use. So basically the idea is, I don't like the fact that there are two factors in the denominator and I want to convert it into two different fractions who add up to this, right? अच्छा. So I want to say that t by t plus 1 multiplied by t square minus t plus 1 should be something by t plus 1 plus something by t square minus t plus 1, right? Yes, sir. So that when you take LCM and add, it should become t here, right? Correct? Yes. Whenever you have linear factors, just say t plus 1 is a factor which is linear, then on top you should take a constant, okay? And whenever you have a quadratic factor, then in general on top you should take a linear factor in t. So bt plus c. Is everyone understanding what I am doing? Yes, sir. So when you have a linear factor, take a constant. When you have a quadratic factor, take a linear term here on top, right? So now our job is to find out A, B, and C. Okay, that is pretty easy. You just multiply A times t square minus t plus 1 plus bt plus c times t plus 1. That should be equal to the numerator t, right? Correct? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बी टी इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर, so प्लस बी, that should vanish, right? Yeah. And also you have minus at from here and plus bt from here and plus ct. So you are getting c plus b minus a should be 1, right? Correct? Yes, sir. Also constant term a, and here it is going to be c, so a plus c should add up to 0, right? Yeah. So you have these three equations. You have to solve for ABC from here. It is very easy to solve. You can say from first equation B is minus A. From third equation C is also minus A, right? And you can put both of these things in the second equation, right? So you will get C is minus A, B is minus A, and minus A is equal to 1. So A is equal to minus 1 by 3, right? Yeah. A is minus 1 by 3 आ गया, तो B is equal to C is equal to 1 by 3, right? Sure. So therefore my partial fraction expansion is what? Minus 1 by 3 times t plus 1, and B and C are both 1 by 3, so it is 1 by 3 t plus 1 by t square minus t plus 1, right? I hope everybody has understood what I have done. Yeah, yes, sir.
Okay. Once you have split it, now it is very easy to integrate this one, right? It is directly ln t plus 1 by 1 by 3, right? The first part of it is very easy to integrate, correct? Yes, sir. Minus 1 by 3, 1 by t plus 1. Its integral is done. The second part is 1 by 3 t plus 1 by t square minus t plus 1. This integral is easy. This integral is a little more difficult, but actually not at all difficult. This is over. So I will focus on this one. So I'll say 1 by 3 comes out, and it is integral of t plus 1 by t square minus t plus 1. Now in one of the classes I had explained, somebody had a doubt. I think Yashwant, you only, what we did here, how to integrate such one, right? What is the method to integrate when you have a linear factor here and a quadratic term here? Divide by t. नहीं, divide by t is not going to be very nice because उससे क्या फायदा होगा? देखो t minus 1 plus 1 by t आ जाएगा, right? हाँ, ऊपर में लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना, it is becoming 1 plus 1 by t, so not 1 by t square, right? yes, sir, yes, sir. I noticed that. हाँ, so that's why Sir, that can divide we by t. just Somebody divide it? Like say can again. we divide the bottom part by t plus 1 and just check what is the remainder we're getting? नहीं Then नहीं नहीं नहीं, see, what you are saying is a method, but you are saying it in the wrong context. That method that you are saying, no, just divide it, that is okay if the top part was t cube plus 1 by t square minus t plus 1. Then you can divide, no, higher degree by smaller degree, right? I was just having a thinking like we can take, if it is divisible, we can take the ln. We can take the what? ln. Log. नहीं, देखो, अगर ऊपर वाले टर्म का डिग्री इज हायर देन यू कैन डिवाइड, नो, यहाँ ऊपर वाले टर्म का तो डिग्री इज 1, राइट? नीचे वाले टर्म का डिग्री 2 है ना, Okay, sir. तो I get it. डिवाइड तो नहीं कर सकते हो ना अभी, और कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है। Can you take denominator as a new variable? डिनोमिनेटर एज अ न्यू वेरिएबल, तो उससे क्या होगा फिर? No, that will not work. देखो, I have already explained this in the first class or the second class. I don't remember which class, but now please remember this now. After this, I will not explain again. Okay? Please understand this. Some people already knew the answer of this earlier, but now they are not saying what to do. This is the general integral, right? I thought you were telling something different, so that's why I didn't say this. हाँ, तो तुमको तो पता है ना क्या करना है यहाँ पे, वही करना है ना प्रोसेस। हाँ सर, बस बाकी लोगों को जिनको नहीं पता है वो प्लीज ध्यान दें। क्रिएट करना है ना, व्हाट? लाइक ऊपर वाले टर्म में ये क्रिएट करना है px plus हाँ, q. ऊपर वाले टर्म में क्रिएट करना है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? Yeah. What I want to say is px plus q, can I write it as some constant times the derivative of the denominator, which is 2ax plus b plus some other constant, right? Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. This can be done obviously because ऊपर वाला चीज is linear, नीचे वाला चीज is quadratic, so derivative will be linear. Any linear expression can be written in terms of another linear expression, right? You just have to multiply with some constant and add some other constant, right? Yes, sir. Sir, I got like 2t minus 1 plus 3. तो यहाँ And पे I क्या है, get it. देखो, t हाँ? plus 1 है is equal to lambda times 2t minus 1 plus some constant, right? Yeah. So obviously my lambda should be half, right? Yeah. तो इधर हो इसको जाएगा मैंने minus half बाहर में लिया. और इसको 3/2 ले लेंगे, right? Yes, sir.
सबको दिख रहा है कैसे हो रहा है? हाफ टाइम्स 2t minus 1 plus 3/2 will give me t plus 1, right? I hope it is clear to everyone. What is the advantage of doing this? The advantage is this. Now see, if I write it as lambda times 2ax plus b by ax square plus bx plus c plus mu times by ax square plus bx plus c, the integral is very easy. The first integral is direct, right? Yes, sir. Because you can take this as some z and it will be lambda dz by z, right? And the second integral is also easy because it's an integral of the standard form 1 by a quadratic. You just have to complete the square here and you will get it in a standard form of some square plus or minus some constant. Is everyone understanding what I'm saying? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 1/3 और इस इंटेग्रल को लिख देंगे हाफ टाइम्स 2t minus 1 by t square minus t plus 1 plus 3/2 कॉमन 1 by t square minus t plus 1, ये है, राइट? ये वाला इंटेग्रल इज डायरेक्टली हाफ ऑफ ln of t square minus t plus 1 और ये वाला इंटेग्रल फॉर दैट आई विल डू t square minus t plus 1 can be written as t square minus t plus 1/4 plus 3/4, right? Yeah. And t minus 1/2 whole square plus 3/2, 3/4. Correct. And now this is a standard form. It is of the standard form integral of 1 by x square plus a square, right? Tan inverse. 1 by a tan inverse x by a, right? Yes, sir. तो Yes, इससे sir. आ जाएगा 1 by a tan inverse t minus half by √3/2, right? Yes, sir. So please remember this method. This method is very important because many times you will see situations like this happening. Okay. Anytime there is a linear by quadratic, it is very simple. Try to write the linear thing in terms of the derivative of the quadratic, right? Okay, sir. I hope it is clear. Don't forget it now. Okay. The next one. हाँ क्या बोलो? सर एक बार हम अपना सॉल्यूशन बताएं क्या? एक मतलब और तरीका था हाँ क्या? सर 1/, सर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद एक आ रहा था ना, इंटीग्रल 1/t³ + 1। तो सर इसको जो है उधर उसको लिख सकते हैं t² - t² - 1, t square minus क्या? t² - t² - 1। हाँ सही है. सर इंटीग्रल आइसोलेट कर देंगे। तो t square वाला तो हो जाएगा. हाँ और t-1 वाला ये सॉरी t+1 वाला कैंसिल हो जाएगा फैक्टर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा कैसे? 1 + t और नीचे t। t³ + 1 है तो वो t + 1 कैंसिल हो जाएगा. You will get t minus 1 by t square minus t plus 1, right? हाँ तो हाँ फिर से वही आ गया, right? हाँ We अच्छा हाँ know how to do this. So this is also possible, yes. So it is possible to do it, but I think thinking of this is a little more complicated, right? यस सर तो इसलिए ये मैं नहीं बोल रहा था. इसलिए partial fractions is obvious method. Obviously, it is also possible to do it like this. Fine. Then the next one is this one, okay. dx by x square plus x plus 1 whole square. इसको integrate करना है. Think about it, what to do.
So can we take x common from denominator? ठीक है, इससे फिर क्या होगा? तो सर 1 by x square क्रिएट हो रहा था. तुम x कॉमन बाहर ले रहे हो कि x स्क्वायर ले रहे हो बाहर? x कॉमन. मतलब क्या आ रहा है तुम्हारा, कैसे लिख रहे हो? dx divided by x square. ऐसा है? हाँ. तो हम्म, 1x आ रहा है. तो इससे कुछ फायदा हो रहा है? सर वो जो स्क्वायर के अंदर वाला टर्म है उसको t लेने पे 1 minus 1 by x square आ रहा था. लेकिन तो ऊपर में तो है नहीं वो. 1 बचे यहाँ से. हाँ, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं है ना ऊपर में, तो इसीलिए इससे कोई फायदा हुआ नहीं तुमको अभी. हाँ. थिंक ऑफ समथिंग एल्स. One simple thing I can tell you is Sir, can we take x plus 1 as t? x plus 1 as t. तो उससे क्या फायदा होगा बताओ? सर dx ही फिर dt बन जाएगा और उसके बाद अच्छा हाँ स्क्वायर कंप्लीशन. इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है ना, हाँ x plus 1 से कुछ खास हो नहीं रहा है फायदा, राइट? तो इस- देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, राइट? करेक्ट? दिस इज द Can sir, can we use integration by parts? बट व्हाट इज द सेकंड फंक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? कुछ भी तो अच्छा नहीं है ना. कुछ तुमको समझ में आए? कौन सा सेकंड फंक्शन चुनोगे, क्या फर्स्ट फंक्शन चुनोगे? वन को चुन रहे हो? हाँ No, no, sir. मेरे को एक लाइक कल आपने एक बोला था कि वो सेकंड क्वेश्चन में कल के सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था बताओ? सर लाइक हम्म, सर अगर मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करूंगा ना x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आएगा ना प्लस मैं जो इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा ना उससे मुझे x इंटू टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब मिलेगा ना. x into you get you have to differentiate this, so you'll get minus 2 by x square plus x plus 1 whole cube, and then you have to also differentiate inside part, so it will become 2x plus 1, right? क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसी था ना सर एक एक के ऊपर का डिफरेंशिएबल था और उसके साथ x भी था. Okay, you are getting something like this now. No, आई एम सेइंग x को कॉमन निकाले तो 2x प्लस 1 इट इज डिफरेंशिएबल. x को कॉमन निकालने मतलब अभी और क्या कॉमन निकालेंगे, ये तो नो सर इंटीग्रेशन. कल के क्वेश्चन में ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बाहर था और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर था तो अपने वो इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिया था जब काम कर रहा था वो. तुम क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन था फिर से एक बार? क्वेश्चन तो होगा ना तुम्हारे नोट्स में कहीं ना कहीं, बताओ. कौन सा क्वेश्चन था एग्जैक्टली बताओ मुझे. बाकी लोग अपना ट्राई करें प्लीज, यहाँ से ट्राई करो आगे. सर डन. हो गया? यस सर 2/√3 tan इनवर्स 2 into x plus 1/2 upon √3 plus ठीक है, c. कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्या किया फिर? Sir, we can say x plus 1/2 whole square dx1 प्लस plus थ्री. √3/2 whole square. फिर अरे sir, I forgot that whole square. ओ तब तो इजी है, Oh, होल स्क्वायर है तो sir, I forgot this क्वेश्चन one. Sorry, बदल दोगे तो फिर जल्दी बन जाता है. sir. Sir, I forgot. सर हाँ बताओ. कल वाला क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो, क्वेश्चन बताओ मुझे ताकि मैं. लाइक सेकंड क्वेश्चन आई ऑफ x इक्वल्स
तुम्हारी वॉइस, योर वॉइस इज नॉट एट ऑल क्लियर, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर माइक. जस्ट सेंड अ पिक्चर एज अ मैसेज और समथिंग. Can I can I tell you अरे sir, like x square into x set square plus Yashwant, your mic is not good. Just send me a picture of the question or something. Oh, I think you are referring to that x wala question, okay? yeah exact yes sir. हाँ, तो देखो, integration by parts was working because one of the things was nicely integrable. एक inside वाला part, right? Trigonometric वाला part, right? या सर अभी यही क्वेश्चन में भी ऐसे ही बन रहा है ना, कुछ पैटर्न ऐसा करे तो. नहीं, बन नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम तुम नहीं समझ रहे हो. तुमने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है. इंटीग्रेशन में पार्ट तुमने लगा दिए, ठीक है. तुमको ये समझ में आया कि यहाँ पे तुमने वन लिया है, वन इज योर फर्स्ट फंक्शन, नो सेकंड या फंक्शन, यस सर. and you have integrated one, you have put x, you have differentiated this, and you have gotten this, right? यस Correct. सर. इसके बाद अब बताओ, तो यहाँ पे इस ये वाला जो इंटेग्रल है, do you think it is easier than original one or harder than the original one? मुसीबत पड़ गई. यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड इंटेग्रल है, इट इज मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन. Do you understand, Yashwant, what I'm saying? No sir, like we can take so we can take like x as the first function, no second function, right? And then we can differentiate it. तो उल्टा चीज करके फिर वापस यहीं पे आ जाओगे. तुम सर्कल में घूम रहे हो, समझ में आ रहा है. Yes sir, I got it. एक बार तुम वन को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हो, दूसरे बार बोल रहे हो अब एक्स को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लोगे, फिर से घूम के वापस आ जाओगे. करके देख लो एक बार. किसी न किसी स्टेप में कभी ना कभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, Yes sir. कि केवल बाय पार्ट्स करते करते घूमते रहोगे. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी इंटीग्रल आएगा इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द ओरिजिनल, ठीक है. ओके सर. सर फिर मतलब कब यूज करना चाहिए इंटीग्रेशन में पार्ट्स को, लाइक जब जब फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में. यहाँ पे तो एक अलजेब्राइक फंक्शन ही है ना पूरा सा. यस सर. इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब यूज करते हैं जब एफ एक्स डी एक्स हैव डिफरेंट नेचर, मे बी कुछ अलजेब्राइक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई एक्सपोनेंशियल है, अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, तब जनरली यूज करना चाहिए. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं ऐसे बता देता हूँ कि इस केस में यूज करना, इस केस में मत यूज करना. देयर इज नो सच रूल. ओके, कब यूज करना है, जब उससे बन रहा है क्वेश्चन तब यूज करना है, ठीक है. ओके सर. यहाँ पे तो बन नहीं रहा है ना. या आई गॉट इट. There is no general rule to tell you when to use it, when to not use it. Integration is all about doing different things, trying things. Maybe you will get it, maybe that method will not work. Okay. But in this case, what is happening is whenever you do integration by parts, the integral that comes, the second integral, is more complicated than the starting one. Okay. Yeah. That's why we are not going to use it. So what I would suggest is this. ऐसे करके लिखो यहाँ पे. Has anybody made any progress from here? No, I can't proceed from here, sir. हाँ क्या? So I can't able to proceed from here. Okay. तो इस पॉइंट पे यहाँ पे you can say x plus half as t. X plus half as t लोगे तो dx will become dt, right?
Oh, understood, sir. Yeah. So now the integral looks a little better. It is not solved, but it is looking little better, right? Yes, sir. At least it looks a little simpler. You have removed the middle term x, right? Yes, sir. Now from here, we will think of some nice substitution. What is the common substitution that you should do when you have something like this? x square plus a square. कौन सा substitution होता है? I can write x equals x को a tan. Correct. x को a tan theta लिखते हैं इसको इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाता है, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Sec I. हाँ. So here also I have t square plus 3 by 4. So the normal thing to try would be t को root 3 by 2 tan theta, right? Correct. yes sir. So dt will become root 3 by 2 sec square theta d theta, and the integral will start looking like this: root 3 by 2 sec square theta d theta on top, and in the denominator you will get 3 by 4 tan square plus 3 by 4. So that will become 3 by 4 sec square theta, right? Yes, sir. 3 by 4 sec square theta का whole square, right? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नीचे में sec पावर 4 है, तो नीचे में बन जाएगा sec square theta after cancelling this, right? और you will get root 3 by 2 constant outside, and नीचे से आएगा 9 by 16 outside, and you have integral of 1 by sec square theta d theta, right? Yes, sir. So that is integral of cos square theta d theta. Yes, sir. So you have basically 16 root 3 by 18 cos square theta d theta का integral. Cos square theta को लिख सकते हो half plus cos 2 theta by 2. Yes, sir. And integral of that is theta by 2 plus 1 by 4 sin 2 theta. Okay, okay, sir. Is Fine. everyone understanding what is happening? Yes sir. The benefit of doing this, completing the square, was it helped us remove this annoying term, this middle term. If the middle term was not there, I would have directly done a substitution of x is equal to tan theta, right? Yes sir. समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? Yes, sir. Because sir, 1 plus tan square theta is sec square theta. हाँ, अगर मिडिल टर्म नहीं रहता तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू tan थीटा डाल सकते थे, लेकिन मिडिल Yes, sir. टर्म है इसलिए यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हो जाएगा नहीं, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, विच इज अनोइंग. हाँ, yes, sir. तो इसलिए अभी हम लोग ने पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, उससे ऐसा बन गया वो, एंड आफ्टर दैट वी डिड दिस सब्स्टिट्यूशन. ओके, हाँ सर, ठीक है, समझ गया सर. everyone should try previous year's questions, do as many as possible. If you have doubts you can put it on the group पे लोग एक दूसरे का सॉल्व कर ही रहे हैं, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं भी ट्राई करके बता दूंगा. Continue solving questions, PYQs, okay? And next week onwards we'll start doing definite integral. Sir, I have a conceptual doubt. What? Sir, as we know that the integration is antiderivative, and by definition the derivative is the slope at any given point, while integration is the area under the curve between 2 points. So sir, what has slope to do with the area? Like, how to visualize this? That's why I told you, no? Have you read Thomas and Finney chapter 5? अच्छा हाँ, you told yesterday. मैंने बोला था तुमको ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ने. Sir. तुमने डाउनलोड किया बुक कम से कम? Yes sir, डाउनलोड किया था, पढ़ा नहीं. तो पढ़ के आओ ना क्लास में. Okay sir. सब चीज मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या पढ़ोगे? Okay sir. पढ़ लो एक बार पढ़ोगे तो फिर डाउट नहीं होता. एक बार पढ़ लो, उसमें है सब एक्सप्लेन अच्छे से. Okay sir, okay, I'll do. रीड चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटीग्रल इंट्रोड्यूस हो रहा है. वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है कि हाउ द एरिया अंडर कर्व इज वेरिंग एंड हाउ इट बिकम्स एन इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल. तो यू नीड टू चेक दैट आउट फर्स्ट. अगर वहां से समझ में नहीं आएगा तो फिर आई विल एक्सप्लेन. ओके Okay sir.
In the next class, Sir, I have a doubt. Hmm. So like I'm doing the so like problems in my home also, but what's the mistake I'm doing regularly? What is the mistake? Like that's what I'm not getting right. What the mistake I'm doing so that the problems are not getting solved. There is no mistake. शुरू में सबको डिफिकल्टी होती है, इसमें मिस्टेक क्या है? तुमको मैंने भेजा था वो एलन वाला बुकलेट, राइट? यस सर, मैं इसका पीडीएफ सॉरी जेरोक्स लिया था। उसमें कितना % बन रहा है? अभी तो मैं इलस्ट्रेशंस कर रहा हूँ और वो जो थ्योरी पार्ट है उसको अच्छे से रिफर कर रहा हूँ। तो जब इलस्ट्रेशंस कर रहे हो और अभी एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे हो, कर रहा उसके भी थोड़े 10-15 क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कितना हो रहा था? हाउ मच % यू आर एबल टू डू? सर I took 3-4 hours and did like less questions, 20 questions. बट वर यू एबल टू डू 20 ऐसे कितने हुए? तुमने जितने ट्राई किया उसमें से कितने हो रहे थे? 20 हो रहे थे। सब हो गए? या तो फिर सब तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Right now you are in 11th, right? This is the first time you are doing integration, right? या So first time when anybody learns a new chapter, always you will struggle a little bit, no? तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही तुमने पहली बार किसी चीज को पढ़ा, इमीडिएटली यू विल बिकम रामानुजन? ऐसा नहीं होता है ना? यस सर, आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होता है, कोई भी इमीडिएटली थोड़ी एक्सपर्ट बन जाएगा। तुमने अभी शुरू किया है ना सीखना चैप्टर, या तो धीरे धीरे होगा ना। अच्छा, ऐसा थोड़ी होगा कि तुरंत जादू हो जाएगा कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। So there is nothing to panic, there is nothing to worry. You have to study properly and continue doing it. If you continue doing it for 2 weeks, you will feel much better. If you continue doing it for 6 months, you will be an expert. सर थैंक यू। सर एक बात पूछूं सर? सर आपका जो आपने जो सीट दिया था सर, उसमें तो उसमें से जो क्वेश्चन है ना सर, वो मतलब कब करना चाहिए ना? अभी तो सर इसके साथ साथ करूँ या बाद में करूँ सर उसको? वो क्वेश्चंस बहुत टफ है, अगर तुम मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी मत करो। अभी पीवाई हाँ, की मेंस हो जाने के बाद सर उसको मतलब वो क्वेश्चंस काफी टफ हैं, उसको बाद में ही करना जब मेंस हो गया और प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस हो गए, और बाकी हाँ सब मैथ्स का बाकी सिलेबस भी तो हम लोगों को करना है ना। तो हाँ you can सर। do it later. If you feel like you are very strong in integrals, then you can do it. But if you feel like you don't have that much confidence, then right now you don't need to do it. You just do your PYQs. Okay. ओके Those सर। that questions, that sheet is for students who are trying to be very good at it, like who are already very confident. Okay. Sir, and what should I do? What should you do? Yes, sir. You should I am do feeling your- very weak in integration. तो तुम अभी तक कहाँ से सॉल्व कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो तुम? सर, आई हैव अ बुक कॉल्ड ML अग्रवाल, इसके सॉल्व एग्जांपल्स कर रहा था मैं अभी। कल आपने बोला था ना, आपकी वीडियोस देखी मैंने सारी इंटीग्रेशन की, और बस सारे फार्मूलाज याद किए और वापस हाँ से, और यही हाँ, सॉल्व कर रहा हूँ बेसिक। देखो तुमको उतना जेई एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन तो आएगा नहीं सीएमआई में, राइट? So what you should focus on is Thomas and Finney theory and previous year's questions of your CMI. ओके सर। Don't do ML Agarwal and all. अगर तुमने मेरे वीडियोस देख लिए हैं तो उसमें ऑलरेडी सारे टेक्निक्स तो लगभग होंगे ही। यस सर। All the basic methods are there in the videos. You don't need more than that, okay? What you need to do for your exam is Thomas and Finney chapter 4, chapter 5, chapter 5 में volumes and solids of revolution वो सब है। अच्छा तुमने देखा है? सर, ये देखता सब हूँ। तुम्हारे सीएमआई के सिलेबस में है, तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। एंड सर, व्हाट अबाउट दिस ISI, सब इसमें भी है सेम, ये सब? उसमें भी ये सब होगा। तो तुमको थॉमस एंड फिनी का चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये सब करना होगा अच्छे से। ओके सर। तुम उस पर ध्यान दो, एमएल अग्रवाल और वो सब मत करो, वो सब टाइम वेस्ट है। अच्छा, नहीं वो सर 12th की बुक थी ना मेरी, दैट्स वाई। हाँ, लेकिन वो उतना अच्छा बुक नहीं होगा ना, उसमें थियोरेटिकली बहुत अच्छे से नहीं दिया होगा।
तुम ओके सर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो सीएमआई के, और थॉमस एंड फिनी के 4 चैप्टर्स करो, ये सब इंटीग्रेशन वाले। ओके सर। अच्छा, तो इंटीग्रेशन हो जाने के बाद कौन सा चैप्टर होगा सर आपकी क्लास में? इंटीग्रेशन के बाद अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल होगा ना पहले, हाँ सर, उसके बाद सर? उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया अंडर कर्व होगा। ठीक है सर। एओडी कब होगी सर? एओडी सर बिफोर मेंस होगी सर? ऑब्वियसली सब होगा, इतना हड़बड़ी क्यों है, सब हो नहीं जाएगा, सर, चिंता मेंस मत तो करो। सर 24 को है ना सर, इसलिए सर उससे पहले। उससे पहले नहीं हो पाएगा एओडी, ये सब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना हम लोग, समझ रहे हो? अच्छा सर। ठीक मतलब है सर, उसमें से मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सर आपको भेजूंगा सर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है सर। लेकिन अप्रैल मई से पहले सब चीज हो जाएगी, इतना गारंटी है। ओके सर। अप्रैल में भी मेंस होगा ना, उससे पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक। सर हम्म। आपका वो यूट्यूब पे जो अभी नंबर थ्योरी वाला चल रहा है, तो सर सीएमआई और आईएसआई के लिए मतलब आपका जो लेक्चर है उसके साथ पाथफाइंडर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक रहेगा मतलब। सीएमआई और आईएसआई में जो भी नंबर थ्योरी और ओलंपियाड वाला मैथ्स आता है, उसका अगर किसी को तैयारी करना है तो हाँ देयर आर 2 प्लेसेस। एक मेरा नंबर थ्योरी वाला सीरीज चल रहा है, वो उससे पढ़ सकते हो, हाँ हाँ अभी अभी चल रहा है, उसके वीडियो सारे देखो, उसके सारे एग्जाम्पल्स करो, सारे हाँ बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हाँ तो P1 P2 सीरीज है, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, और T1 T2 वो थ्योरी है। ठीक है। हाँ ये नंबर थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू आल्सो सिकंदर। आई यस थिंक यू सर। आल्सो हैव नंबर थ्योरी एंड ऑल, राइट? हाँ यस सर, नंबर थ्योरी तो सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो रेगुलरली। सब ये सब से प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, या हम्म। फिर मैथ्स ओलंपियाड वाला जो कोर्स है यूडेमी पे, या मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट है, एक फुल प्लेलिस्ट है विच हैज एवरीथिंग, कॉम्बिनेटरिक्स, मैथ्स, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, वो सब है। हाँ सर, देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सर, उस पे बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं नंबर थ्योरी के, उससे करता हूँ मैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अच्छा ही वेबसाइट है, इससे करते हो तो अच्छा है। तो basically I'm saying what I have which you can use. Obviously there are many other nice sources, AOPS पे बहुत सारे problems हैं, but the problem is वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस will be too difficult for you. नहीं सर, यूएस का जो ओलंपियाड है ना, उसके ठीक रहते हैं क्वेश्चंस शुरू वाले, मतलब तुम ठीक ठाक। AMC देखते हो, AMC 10 देख रहे हो क्या? एएमसी 12 और एएमसी 10, शुरुआत एएमसी 10 से किया था, अब 12 पे आ गया हूँ। हाँ ठीक है, AMC 10 और 12 ठीक रहेगा, लेकिन उसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं कर सकोगे। ठीक है। ओके सर। AIME, USAMO, ये सब will become too difficult. So if you are focusing on AMC 10, AMC 12, that is good, I think. You can do it from there, that level. ठीक है। ओके सर। But definitely try and see through the videos that are already on my channel. वो सब पढ़ोगे तो उससे इसको सुन लोगे कम से कम, तो कुछ कुछ सीख ही जाओगे। ठीक है। तो the remaining part of your syllabus, which is Olympiad based, you should go through the videos there on the channel. ठीक है। एक मैथ ओलंपियाड ट्रेनिंग कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो, ये नंबर थ्योरी वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके फाइन, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके सर। For JEE, I don't, Saurabh, there is no requirement for number theory in JEE. Okay. नो सर, वो जो पीएनसी में थोड़ा थोड़ा आता है ना सर, उसके लिए मतलब वो नॉर्मल क्वेश्चन करने से ही हो जाएगा ना? नहीं, उसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बेसिक जो नॉर्मल कॉमन सेंस, ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये सब पता होना चाहिए ना, हाँ हाँ वही। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये सब सब बेसिक चीजें तो जेई वाले बुक्स में भी होती हैं, लेकिन जी उसके लिए सर। तुमको ओलंपियाड का चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली। ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ देन। ओके, थैंक यू सर।